brother, please come and update the live update. As we saw this morning from website that company is going to update a lot of things inside. I need to listen from you. Team is waiting to listen the live update. So can you come? Can you join, please, and tell all the updates, whatever company have the updates. So, Chris, are you there, brother? Chris? मास्कोटा सो फुल हो चुका है. ओके, मैं उसको टेक्स्ट ज्वाइन. Okay, brother, join and start the update. Okay, 1 second. Okay, 1 second. Says all update, please. Hi everyone, it's Chris here. Yeah, I know everyone received the news and Yeah, hi. Yeah, so I know everyone received the news, so don't worry about that. It's just a little bit maintenance and update for the platform. And due to this time, all please calm down and just follow FVP step, okay? FVP now, we know it's very big company, very big platform that we can trust. And also the F1 team, all of you can search on the Twitter, Alpine. We are already cooperate with Alpine F1 team. And also, one more good news to us, that is the biggest expo, the financial expo in Thailand, Bangkok. You can search on the Thailand Bangkok Expo. Do you all of you remember last time we have the expo in Dubai? That time we are the second sponsor of the expo, only the second largest. But this time Thailand will be the different. This time Thailand FVP will be the first and the biggest sponsor to the expo. Means everything will be sticker with FVP logo, FVP everywhere, and everyone will know more about FVP. And soon we will be opening Thailand market. And also China Shenzhen office will be opening soon. The China border also opening soon, very soon, and we will giving out tickets to all our members can visit our headquarters in Asia Pacific. Okay, so this is all the good news to us. So only a few days, guys. Only a few days. Please keep calm, please. Stay calm and don't be panic. Don't try to call or message anyone. Just wait for FVP update. FVP will be doing it very good and will be update all of us very soon. Okay? Ashok bro, do you copy what I say? Yes, bro. Yes. That's what I share my message this morning when I saw update on website. I say this company have bigger vision, bigger platform, have some maintenance, have some trouble, but everything will be okay. So no need to go panic or no message, more message. Please have fun, have a stay, have calm. Wait for next update. या next for आप लोगों को wait करना है for next update. So whatever updates you are getting on the website only. Don't take don't take outside people update, because the competitor who don't want to stand with us. Okay, so they will create more negative news. So don't worry, don't listen to anybody, listen to yourself, see the website, then you stay calm,
everything will be all right as per company update. Okay, whatever update Yes. coming, it is coming to you. And say Always, about Malaysia update. always. Malaysia update soon. We will have more picture and video sent soon. So please wait for our update, and also just focus on the website announcement. Don't get negative news from outside. Now is the time they start attack. So please stay calm. Yeah, I just heard from the website that in Malaysia there is a lot of COVID happening now. So due to Yes. that, because FVP inviting 10,000 people to the Malaysia, so due to Yes. that, government has informed that there no event on 23rd, 24th, and it will be postponed for the next update. Yeah, they will be postponed for next updates. Tickets, everything is ready. Just change. We will update soon. So please just wait for our information. That's all. ओके तो अभी आपको आप लोगों को मैंने बताया कि क्रिस को मैंने सुबह से रिक्वेस्ट करके आप लोग भी बहुत लोग सब लोग जानते हैं क्रिस को, सब लोग जानते हैं, यूएन को, क्रिस को, सब लोग जानते हैं। तो मैंने सुबह से 50 मैसेज मैंने कर दिया हो। मैंने रिक्वेस्ट किया एज पर टीम रिक्वेस्ट के क्रिस यू कम एंड से समथिंग अबाउट लाइव अपडेट। सो मैसेज और लाइव अपडेट दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। डिफरेंट तो नहीं होता है, एक बार अगर अपडेट देता तो ये बहुत बड़ी अपडेट होता है। सो कोई एज पर नाउ हमें बिल्कुल कूल काम पेशेंस रखना है। नेक्स्ट अपडेट जो भी कंपनी का आ रहा है वो अपने को उस पर एक्शन लेना है, राइट, वैसा व्यू करना है। सो ये था अपडेट आज का। इवेंट पोस्टपोन्ड हो चुका है, सारी टिकट कैंसिल हो गई है, नेक्स्ट इवेंट के लिए तैयारी हो रही है। एंड अभी जो मे बी साइट अभी ट्रांसफर, इंटरनल डिपॉजिट और ये सब ओपन है, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो भी डिपॉजिट है वो मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक सिस्टम एकदम एब्सोल्युटली ओके नहीं होता है तब तक आपको कोई डिपॉजिट मत कीजिएगा। आज मॉर्निंग से लेके अगला अपडेट आने तक, अगला स्टेप होने तक कोई भी डिपॉजिट नहीं करना है, ठीक है। और ग्रुप में अपडेट रहिए, ग्रुप में चेक करते रहिए, जो भी अपडेट है ऑफलाइन से लीजिए, पैनिक मत होइए, पैनिक का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, कंपनी वापसी आने के लिए सब रेडी है। बेसिक माइनर अपडेट है, वो अपडेट के लिए हमें वेट करना है। हमारे घर में भी प्रॉब्लम होती है, बारिश होता है, रास्ते खराब हो जाते हैं, हम जा नहीं पाते, तो क्या करते हैं, एक दो दिन घर में वेट करते हैं, जब वो रोड सही होता है तब हम जाते हैं बाहर। तो उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल है, हो सकता है आप लोग और मैं और आप अलग नहीं है, हम लोग साथ में हैं। जो भी है अपडेट मेरे लिए, आपके लिए कोई अलग अलग अपडेट नहीं है, ऑल अपडेट आर सेम। सो प्लीज़ मैसेज कॉल नहीं करें ज़्यादा, और अपने टीम को भी यही मैसेज आप लोग दे दें। थैंक यू सो मच। ये क्लोज करता हूँ मैं अभी, और फिर मिलते हैं अगले किसी और अपडेट में। थैंक यू सो मच।